Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are discussing current affairs of 11th and 12th September. Okay. So first is about PM Modi. PM Modi to embark on 2-day visit to Uzbekistan for SCO summit on September 15th. So PM Modi will be on a 2-day visit to Samarkand of Uzbekistan from 15th September to attend the 22nd meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization. तो SCO का फुल फॉर्म क्या है? शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसकी 22nd मीटिंग को वो अटेंड करेंगे उज्बेकिस्तान में. ठीक है. और वहाँ पे क्या टॉपिक जो हैं, क्या इश्यूज डिस्कस होंगे? तो ग्लोबल इम्पोर्टेंस, टॉपिकल इश्यूज ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल इम्पोर्टेंस आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग. The next is about PM Modi will inaugurate International Dairy Federation World Dairy Summit on 12th September. It will be organized at India Expo Center and Mart, Greater Noida. Around 1500 participants from the 50 countries are expected to participate in the 4-day IDF WDS 2022, that is International Dairy Federation World Day Summit. इसमें अराउंड 1500 पार्टिसिपेंट्स होंगे 50 कंट्रीज से. ठीक है. द लास्ट समिट वॉज हेल्ड इन इंडिया अबाउट हाफ अ सेंचुरी अगो इन 1974. तो 1974 में लास्ट ये समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, हेल्ड हुआ था, और अब ये हो रहा है 12 सितंबर को. ऑल राइट. And the next is about PM Modi to launch Cheetah Reintroduction Project on September 17th. So PM Modi will launch the Cheetah Reintroduction Project on 17th September. For the purpose, cheetah will be brought from Namibia. This is the first time that the cheetah is being reintroduced after its disappearance from India in the 1950s. Alright. The next is Vinoba Bhave's birth anniversary 11th September को. सो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आचार्य विनोबा भावे ऑब्जर्व की जाती है 11 सितंबर 2022 को. ही इज रिगार्डेड एज द नेशनल टीचर ऑफ इंडिया एंड द स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ महात्मा गांधी. इन्हें नेशनल टीचर ऑफ इंडिया कहा जाता है एंड स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ महात्मा गांधी. In 1940, he was selected as the first individual satyagrahi against the British Raj by Gandhi ji. भावे. अब इनके बारे में एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए. वो क्या है कि भावे इज द बेस्ट नोन फॉर स्टार्टिंग द भूदान, दैट इज गिफ्ट ऑफ लैंड मूवमेंट इन इंडिया इन 1951. ही पास्ड अवे इन 1982. तो आपको क्या पता होना चाहिए किसने भूदान मीन्स गिफ्ट ऑफ लैंड मूवमेंट की शुरुआत की थी, दैट इज भावे. और उन्होंने कब की थी? 1951 में. ऑल राइट. Then next is about Singapore confers meritorious service medal to former Navy chief. The former India Chief of Naval Staff Admiral Sunil Lamba was conferred Singapore's prestigious military award. उनको सिंगापुर का prestigious military award मिलेगा. ठीक है. The Pingat Jasa Jamilang और meritorious service medal He was awarded by President हालिमा याकूब. अब इससे आपको एक और चीज पता चल गई कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, दैट इज हालिमा याकूब. इन सितंबर 2022 for his outstanding contributions in enhancing the strong and long-standing bilateral defense relationship between both the nations. ठीक है. NTPC to supply renewable energy to armed forces. NTPC Limited has entered into an agreement to supply renewable energy power to the armed forces. This is the first such agreement by the Indian Armed Forces for sourcing power from renewable energy sources. This agreement will help towards the gradual decarbonization of the armed forces. अब NTPC Limited कब फाउंड हुआ था? 1975 में. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में. चेयरमैन कौन है इनके? गुरदीप सिंह. तो आपको पता चल रहा है कि आपको एक्चुअल में जो करंट अफेयर जब हम पढ़ते हैं वो सिर्फ वो उस न्यूज क्या है वो नहीं पढ़ना है, साथ में आपको उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रिसर्च करके याद करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. President nominates Ghulam Ali, a Gurjar Muslim from J&K to Rajya Sabha. President Draupadi Murmu has nominated Ghulam Ali, a Gurjar Muslim,
from Jammu and Kashmir to the Rajya Sabha. Mr. Ali has been nominated to the Rajya Sabha on the recommendation of the central government. This is for the first time. ये first time है इसलिए आपको याद करना important हो जाता है. A Gujjar Muslim from the region has been sent to the Rajya Sabha as a nominated member. अब राज्य सभा के चेयरमैन कौन है? जगदीप धांकर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑलराइट. मेघालय सीएम लॉन्चेस रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल. तो मेघालय के सीएम ने एक पोर्टल लॉन्च किया है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. ओके. वहां के सीएम कौन है? कॉर्नाड के संगमा recently launched the online portal of the Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA. It will be beneficial for monitoring and better implementation of other services and programs of the government, especially in critical areas such as healthcare. The digitization process will connect more than 6,000 villages in the state to the online system. ठीक है. Archaeologist B.B. Lal passes away. Noted archaeologist Braj Basi Lal, who led an excavation at Ram Janmabhoomi site in the mid-1970s, passed away. He was honored with Padma Vibhushan in 2021. इनको पद्म विभूषण मिल चुका है 2021 में. He was considered India's senior most archaeologist. ठीक है, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि इनको कौन सा अवार्ड मिला था. Lal and was actively involved in archaeological research and writing till the age of 100. ये 100 years की एज तक अपना काम करते रहे. ठीक है, जो भी रिसर्च थी, राइटिंग थी, ये he continued till the age of 100. He was trained by Sir Mortimer Wheeler at Taxila in 1944. After which he joined the Archaeological Survey of India and served as its Director General from 1968 to 1972. तो 1968 से 1972 तक ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के. तो इनके बारे में आप जानना आपके लिए ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है. India's easternmost military garrison of Kibitu named after Bipin Rawat. The strategically important Kibitu military garrison on the banks of Lohit Valley along the line of actual control and a key road in the mountain hamlet were named after India's first Chief of Defence Staff General Bipin Rawat. आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के फर्स्ट CDS कौन थे. The military garrison looks after the line of actual control LAC in the sensitive sector. Chinese People's Liberation Army's Rima post is just opposite the Indian garrison. The small hamlet is inhabited by Mayor and Jharkhand tribes. ठीक है. Central government fixes maximum number of wards at 250 in Delhi MCD. Central government has fixed the maximum number of wards in the Municipal Corporation of Delhi at 250. Out of these, 42 wards have been reserved for SCs. Earlier, the total number of seats in 3 MCDs was 272. In May 2022, a notification was issued by the central government for the unification for 3 civic bodies of Delhi. So that's all for today. I hope you liked our video, and if you have any query regarding the admission of CLAT, Judiciary semester, then you can contact us and the number is given below in the description box. Thank you.